ਖੋ ਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਖੋ ਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਰਿਚਿੰਗ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10th ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੋ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੋ ਖੋ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਵਿੱਚ volunteers, players, coaches, trustees, a board member, and every supporter, thank you for your hard work, commitment, and belief in our vision. Without you, none of this would have happened, whatever we have achieved now. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੋ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ के फाउंडर और इस दे नाल ही चेयरपर्सन ब्रिज हल्दानिया जी आओ गलबात करते हैं इन्हां दे नाल ब्रिज जी आज जिस तरह का मैच खो खो का चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहो कितनी टीम से अभी मैच ये स्टार्ट ही हुआ है Very excited. As you can see, there's so many people, more than 400 people, and match are going really well. 17 teams are participating. Half, 4 of the matches is already gone. We got women, we got male, and we got junior team. And I'm so excited. You can see that everywhere. Exactly. The excitement is there. People are happy, and I'm loving it. So what is the main objective to organize 10th National Kho Kho Championship? So we have been doing this championship for last 9 years. And idea is to go to our Commonwealth, World Cup, and also um, Olympic. That's our main dream is the Olympic, and which we are doing to 2036. Our Prime Minister Modi already announced it because India is hosting the next Olympic in 2036, and the host country can bring 2 games of their choice. And Mr. Modi has already explained and said that Kho will be the next Olympic game. Wow, that's very good. So today our first day, right? Yes, today is our first day. Oh, it's going very well. And whatever we are trying to do, it'll be even getting better every single minute. So I'm excited, and hopefully
everybody else will be very, very happy. And people who are watching, come and have a look. The atmosphere is fantastic. So, आज जो पहला दिन था वो तो काफी ज्यादा एनर्जी वाला दिख रहा है, लेकिन कहीं आप 10 सालों से इस खो खो को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हो, तो इस बार का खो खो इंटरनेशनल 10th नेशनल चैंपियनशिप जो है वो 2 दिन का रखा गया है. सो व्हाट इज यूनिक इन Right. So normally we used to do in one day. And one day is like we start early morning, 7 o'clock, and finish at 7 o'clock, 8 o'clock. So we thought decided to have from 10 o'clock to 4 o'clock. People can go and it's hot. It's very too hot as well. And children want to have a break. Also, 2 days is like more time for people. People coming from Manchester, Leicester, they're coming early morning and going late. So this is the reason we decided to have a 2 days and spread it out so people can relax. And the more uh, game wise and other matches we can make, instead of like having 2 3 matches, we are doing league matches. So every team playing with each other. So that's the reason we put it down as a two days. थैंक यू सो मच ब्रिज. Thank you so much. Thank you, GTC. Thank you, Anmol. Now we have with us Rohit Haldania, Kho Federation of England co-founder and General Secretary. Rohit, welcome to GTC Punjabi. Thank you for GTC Punjabi for being here at the 10th National Kho Championship. So Rohit, what's going on? Today's the first day. Yeah, so today's day one of our national championship, and we've got teams and players come up from across the country, from across the UK, to participate in the traditional game of Kho. So this is the 10th national champion. What is the measurable impact have the previous 9 ones? As each year's been getting better and better, the game of Kho is a very strategic, very technical game, and now we can see the players really playing at a much higher standard. At the 9th one, we were selecting players for the Team England for the first ever Kho World Cup, which was taking place in India. But now we are getting ready for the next World Cup, and players are getting better, and our junior players are rising through the ranks as well. So how has the participation grown since the first championship? Kho's been growing across the country at a rapid pace, and I think the game's just going to continue to grow. Lots of more people are becoming more aware of the game, the rules, and the techniques about how to play at its highest level. So what is the long-term strategy? There's a lot of phases to a national governing body. At the moment, we just want to be sharing our passion for the game with a lot of players, a lot of volunteers, parents, everyone, to get the community behind it and to host the second Kho World Cup in England. So why do you organize 2 days 10th national championship? Well, this year we've gained a lot of popularity in the game, and players are playing at a very high level, but playing in one day. You get knackered in this heat. It's a heat wave across the UK, in case you haven't known. Yeah, it's 35. So, players get a bit more of a rest. But also, we are at Riching Sports Park, and we've got this facility as the home of Kho for the next stage of our development. And so that gives us the flexibility with these grounds. And that's why we have 3 courts here and a training ground there as well. I think the game's about to begin, so maybe we move up to the side. What is your expectations of this 10th national championship? I just think a lot of people are going to come here to have fun, learn the game, and I think off the success of the World Cup, there's been a lot of enthusiasm, and I just think we as critics of the game, critics of ourselves, we want to take it to new levels. So we want to get the full community behind this traditional game. So if you're watching this from GTC Punjabi, please come along to our next national championship. If you're free tomorrow, come along as well. We'd love to welcome you all. What is the prize? What is the prize of the winner? I think prize is still to be decided, but I think for now the number one thing is bragging rights. All these teams, players, they know each other. They've been competing across the 10 years. Some of the players were juniors when they begun. Now they're playing in the adults tournament. It's all about getting their own game up and getting selected for the Team England, but also there's a big opportunity to just
just play the game and be to get one up on the rest. Very important question. You are representing Kho England team, right? Yeah. So, what are you doing to attract non-South Asian communities into Kho? That's actually a brilliant question, and one of the things that we want to do is get people from that represent the country to play the game of Kho. We are going into schools, and we've been into a few schools and taught the game. And actually, there's a lot of good reception. We've also partnered just right here in Richings Park with a football club, and during their demonstrations, during their celebrations, we organised the Kho game, and many young footballers got involved with the game of Kho and just jumped right in. And that's the game of Kho. You know, it's a game that its very basic elements is very natural. It's a game of tag, but as you step it up, it can become a lot more technical and advanced. So what do you think about Olympics in Kho? Should the opportunity come, I think Kho is a true sport. It tests your speed, it tests your stamina, and tests your agility, your reflexes. I think it's definitely deserving to be an Olympic sport. There are some criteria as per Sports Accord to get over 50, 60 plus countries involved in the game, officially recognized. And that's where there's a lot of work to do on the governance side of things. But that global growth, that's something we've been working on. We've been visiting Sports Accords conventions where we meet with the Olympic committees. We tell them about the traditional game of Kho. I think our biggest opportunity is if India hosts in 2036. That'd be a great push. So, we hope that India hosts the 2036 Olympics because that'll give us a really good opportunity to present why Kho should be a part of it. Rohit, I think you are running late, and all the best for this match. Thank you very much. Thank you, much appreciated. Thank you, GTC Punjabi. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਲਾਦ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਕੇ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋ 10th ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਚਿੰਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड खो मैच 10th नेशनल चैंपीयनशिप के मेन स्पॉन्सर भी ने तो सनी जी सबसे पहले तो जीटीसी पंजाबी दे विच बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। जीटीसी पंजाबी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने इस ग्रास रूट और ट्रेडिशनल जो इंडियन गेम है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप देख रहे हो कि आज लंदन के अंदर और आपको खो का जो एक होमलैंड है इंग्लैंड की उसके वहाँ पे आप खड़े हैं और हमने पूरा समय लगा दिया, पूरा मेला भरा हुआ है, पूरा ग्राउंड पूरा फुल है, तो थैंक यू। सनी जी किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको इंस्पायर करती है खो चैंपियनशिप को प्रमोट करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही है कि खो के अंदर आप इन्वॉल्व हो? और खो एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था 1959 में और इंडिया में इसकी स्थापना की गई थी, तो यूके में लाना बहुत ही बड़ी बात है, तो इस बारे क्या ख्याल आप? वेल आपको क्रिकेट वगैरह जैसे भी बाकी स्पोर्ट्स हैं उनके तो आपको स्पॉन्सर बहुत हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक जो हमारा ग्रास रूट जो गेम है खो उसके लिए स्पॉन्सर का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं जैसे कि आपने बोला कि मैं फुटबॉल से भी कनेक्टेड हूँ, तो फुटबॉल को भी स्पॉन्सर मिल जाते हैं, लेकिन खो मतलब कि हमको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये ग्रास रूट को हमारे इंडियन हेरिटेज का जो गेम है हम उसको एक वर्ल्ड स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जो काम दुनिया नहीं कर रही है उस काम को हमको करना चाहिए और किसी न किसी को तो इसका झंडा पकड़ना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ और इसी को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो आप, मतलब जो यंग जनरेशन है उन तक इस स्पोर्ट्स को किस तरह से अवेयरनेस दिला रहे हो, किस तरीके से उनको आप ये बोल रहे हो कि आप इस स्पोर्ट्स में आओ और अपने ट्रेडिशनल इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है उसके अंदर इन्वॉल्व होने के बाद इसमें आप अपना करियर? देखिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर खो को प्रमोट कर रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन
ओरिजिन के ही हमारे से बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ से सारी जितनी भी एशियन कम्युनिटी यहाँ पे है, हम उनको सारे को जोड़ के लेकर यूनाइट किया, इकट्ठा लेके आए हैं और सारे बच्चे खेल रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इवन आज जो जो लोकल जो व्हाइट कम्युनिटी है वो भी बड़ी क्यूरियस थी और वो भी देखने के लिए आई और इतने लगन से वो देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ कि वो एक कितने घंटों से कंटिन्यूअसली यहाँ पे बैठे हुए थे। मेरा आखिरी सवाल सन्नी जी, व्हाई वी चूज रिचिंग पार्क? ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस रिचिंग पार्क में कि हमने इसको खो खो का हब बनाया? द रिचिंग स्पार्क्स ये 1920 का से स्टेबलाइज किया हुआ एक क्लब है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज मौजूद है बच्चों के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिम से लेकर के मतलब कि सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है और ग्राउंड्स है। और जैसे कि अजय जी ने आपको बोला कि हम इंडोर फैसिलिटीज के बारे में भी हम सोच रहे हैं, तो हम ताकि विंटर हो कुछ भी हो तो उस टाइम भी बच्चे यहाँ पे खेल सकें। और रिचिंग पार्क एक बहुत ही एक वेल नोन जगह है और जो कि जिसकी कनेक्टिविटी चाहे ट्रांसपोर्ट से हो वगैरह वो हो बहुत अच्छी है। और तो इसलिए हमने इसी को यहाँ का होम ऑफ खो खो बनाया है। वेरी गुड। आखिरी में क्या मैसेज देना चाहोगे जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के ब्रॉन एंड ब्रॉट अप है लेकिन फैमिली जो है वो इंडिया से है, उनके लिए खो खो गेम को किस तरह से उनके माइंड में डाला जा रहा है कि खो खो आप प्ले करो, या उनके पेरेंट्स के माइंड में कि आप अपने बच्चों को खो खो स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करो, सो दैट हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट है उसमें भी हमारे जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो सके? मैसेज देखिए कि मैं हम यही बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि देखो हम पैसा खर्च करके जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, तो आप खो खो खेलिए जिसके लिए आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स को आप परेशान नहीं करोगे फाइनेंशियली, ठीक है ना, जिससे आपकी स्टेमिना वगैरह सब मतलब की फुर्ती वगैरह सब कुछ बढ़ती है, ठीक है ना। तो और आप नशे से दूर रहते हो, गलत एक्टिविटीज से, फोन से वगैरह से, आप सोशल मीडिया के ऊपर आप फालतू की चीज़ें स्क्रॉल करते देखते हो, आप उन चीज़ों से आप बच सकते हो। और अर्लियर मेरे को किसी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप खो खो के स्टार पैदा कर रहे हो, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं खो खो को स्टार पैदा नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा होगा एक दिन हम मेरे को स्टार बनाएगा कि हमने खो खो की जो झंडा पकड़ा था, जो पड़ा था, तो जो आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ, ਤੇ ਹੋਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋ-ਖੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਔਰ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ। थैंक यू अनमोल जी एंड थैंक यू जीटीसी पंजाबी, थैंक यू वेरी मच। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਫਰੋਮ ਹੈਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਚੈਪਟਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋ ਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ किस तरह से सपोर्ट कर रहे ने और आइवर ਦੇ ਵਿੱਚ भी आए ने। सो अजय जी, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जिस तरह आज का 10th नेशनल चैंपियनशिप खो खो ऑर्गेनाइज किया गया है, सो हाउ डू यू सपोर्ट, बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट? Yeah, first of all, I would like to thank GTC Punjabi to give me an opportunity to speak to you guys and give my views on the Kho. So, as a counselor, obviously not as a counselor itself, as an individual, because and being an Indian and born in India and brought up in India, so I obviously played quite a lot of Kho in my childhood, and that is a sports which we play first and close to our heart. So it is always good to promote something which has a very traditional values or traditional Indian values, I will say, and to promote the Kho in England, if you ask me, then what we are trying to do, we are trying to reach out to as many as kids, as many as via the schools, I would say, via the colleges, so that we can tell that what is actually the Kho, what is required, because the Kho requires real strength and the speed, and so you have to be very physically fit to do this. And the good thing is that in the Kho we have created a 3-4 teams type of based on the age scale, obviously men and women adult team, and then kids teams which is below 13. So we want our kids to learn and the grow and then play for the adult team to be part of the England Kho finally, and hopefully in the next next few years or 1 or 2 years we are improving this facilities
with quite a lot of amendments, updates, creating the grounds. We are trying to actually create indoor facilities going forward, because what happened that currently we face the challenge as soon as the winter starts, we have to actually close this training and everything, because in the ground it's a slippery ground. It's very hard to train the kids, and it's a risk. It becomes risky basically. So we are trying to create the indoor facilities. We are talking to some of the schools that if they can give us their spaces, so that we can start our. So there are lots of things as a federation we are doing. So hopefully in next upcoming couple of years, the vision, all of our executive committees, seeing our chairman, our president, our vice president, secretaries, so our executive, whatever the vision we are seeing, hopefully we are able to achieve that. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਜੇ। Thank you very much. Thank you very much. Appreciate it. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਡੇਜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ गुजरात स्टेट के एक्स खो खो कैप्टन भी रहे ने। सो महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ पर आए और खो खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो। सो टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड। My background is that very going back in 1973, 74, 75. I played for the Gujarat, and I was a captain for the Gujarat state for the Kho to represent the state level. And when I came to this country, and I'm talking about it's getting old there, it's about 48 years ago, I met the bridge and the founder, and found out that this is a game is in existence. I think we should promote it, because this game is bring you there's no cost involved to anyone there, and still you enjoy the game with the children. And this is the way you bring the children and family together. And that's why I got my full support there. And I can't wait for actually the Kho Federation to hold a big event is next year. I don't know whether you're aware about it, you don't know, but there's a big what you call World Championship is taking place in this country. We have with us Wendy Matthew, councillor of Ivor. Hi, Wendy. Hi, yes, I'm the Buckinghamshire Council for Ivor, and it's absolutely wonderful to see this game coming here to Richings Park. We'd never imagined when we set up Richings Park that this is where we would get to, but it's fabulous to see everybody here and competing in such a wonderful venue. Are you enjoying this game? It's absolutely wonderful to see all the youngsters out there giving it all. It's fantastic. We are promoting Indian traditional game in UK. So how do you support? Well, we support the sports club, and the sports club are busy supporting this venue for this game. It's fantastic to have it in our community, because we have a wonderful Indian community here in Richings Park, and it's lovely to see them all getting involved. What kind of a message do you convey to our audience? It's great to see everybody, and hope they're all enjoying it online and that they can participate even if they're not here. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵरुण ਜੀ, किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि आपकी डॉटर्स ने भी खो खो ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ किया है? बिल्कुल, सब तो पहला तो थैंक यू अनमोल जी। एंड मेरी डॉटर रितिका रिप्रेजेंट कर रही, शी इज़ द कैप्टन ऑफ रेडिंग रेंजर्स। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਮੇਕਸ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ UK ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰੈਡਿੰਗ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੇयर इज अ लॉट, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਰਡ ਰਮੀ ਰੇਂਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ। सो रमी जी, जिस तरह खो खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आज 10th नेशनल चैंपियनशिप का प्रॉपर 2 दिन से ये पूरा खेड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं पहले तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋ ਖੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਮਰਾਡਰੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਡਿਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰੇਸਿਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਗੋਰੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਕੋਈ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ Now we have with us Ashok Chauhan, MBE, Warrant Officer in British Army. So Ashok ji, how do you feel? Because today we are end of the day of the Kho-Kho 10th National Championship. So how do you feel? First and foremost, I want to say that what a fantastic organisation, and to give the committee who've organised this is superb. One thing that I like to say, because Kho-Kho is original from India, and it's so good to see the youngsters here, and I'd like to see more and more people getting involved so we can be recognised because cricket is there, hockey is there, but Kho-Kho should be front runner too. Now we have with us Ganesh and Shiva. So इनके साथ बात करते हैं हम लोग इस बारे में कि Ganesh, my first question to you. You are also supporting Kho-Kho Federation of England. So one thing I just noticed, Kho-Kho England Federation of UK launched Kho-Kho app. Yeah. So tell me about this first. Thank you very much. We are part of a company called We Retech. So we have associated with Kho-Kho Federation of England in order to make it more digital native now. So we have created an app, first of its kind, for capturing all the Kho-Kho games so far. So we have covered more than 84 games in the app. So we have covered both the defenders and the attackers, and the app make it easier to give it in a schedule, and you can choose all the substitutes and the defenders and everything. And it also tells the player statistics, like who got the most points, who has played well, who is the player of the match chaser. So it covers everything, and we are very proud to be associated with Kho-Kho in a very short period of time and cover this national championship. So Shivam, how this app is working? So basically we're trying to make it so digital. So when I spoke with that federation, they were saying a lot of complication doing the manual one, especially to finding the awards, especially in the last. The app will give it within a fraction of seconds. It will give that statics. So who won the match, who is the best player, who is the best attacker, chaser. Everything will stats. All the stats will give in that. And also planning to do live scoring in the kho.co.uk as well. Going forward. So that's a plan for now. But yeah, to make it so simple for everyone, keep it easy, no complication. So that's the main motive of it. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਐਂਡ ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਜੀ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਖੋ-ਖੋ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ GTC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਖੋ-ਖੋ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਸੋ ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ राजू बाव सर एंड शांताराम यादव जैसे आप बोलते थे रोनाल्डो फुटबॉल में और ये अपने टाइम में ये एक महारथी थे और ये अर्जुना अवार्ड है सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है जैसे ब्रिज जी ने यहाँ मेहनत करके इसको फाउंड किया है और खो-खो आज प्रफुल्लित है और इसको जो पानी दिया है सनी जी ने डॉक्टर सनी जी ने क्योंकि कोई भी गेम वॉलंटियर और पैसे के बिना आगे नहीं चल सकती कोई भी काम नहीं चल सकता तो जो आप उन्होंने आज नेशनल कर दिया है और आगे वर्ल्ड कप होने वाला है सच दिस इज़ अमेजिंग इंडिया को यहाँ ले आए हैं ये
कभी इंडिया में स्पोर्ट्स होती थी यहाँ देखने को नहीं मिलती थी। आज ये इंडिया से आए हैं और ये खुद देख के देखो कितने खुश हो रहे हैं कि यहाँ। आप बोलिए आप। खो इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स, राइट? सो ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि हम लोग इंग्लैंड कंट्री में बैठे, ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारा इंडिया ही यहाँ पर, पूरा इंडिया उठ के यहाँ पर आ गया है। वी आर वेरी सरप्राइज्ड टू सी सच बिग क्राउड एंड सच बिग नंबर ऑफ प्लेयर्स। पार्टिसिपेशन इतना अच्छा है और मुझे ये लग रहा था कि कबड्डी तो काफ़ी थोड़ी जल्दी प्रोग्रेस कर चुकी है, खो खो मुझे लग रहा था कि, लेकिन खो खो भी यहाँ प्रोफेशनल जैसा खेल रहे हैं। जो मतलब इंडिया में हम खो खो देखते हैं वही खो खो अब इंग्लैंड में पहुँच गई है और सेम मतलब परफॉर्मेंस दिख रहा है प्लेयर्स का। आसिम जी, सबसे पहले जीटीसी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है, एंड दूसरी चीज़, वेलकम टू खो खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड। Thank you so much. Thank you so much. First, I'd like to say Sat Sri Akal, Namaste, or Salam to everyone. So you are from Manchester and you are also supporting Manchester team? I have a Manchester team here who I am supporting. I have come specially all the way from Manchester today. तो उनको मैं support कर रहा हूँ। Okay. Firstly, I would like to say to Sunny साहब, well done, excellent। यहाँ आप कोको लेके आए हैं, यूके में लेके आए हैं। ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, हमारे कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। और सब मैं यही कहूँगा सब पेरेंट्स को, सपोर्ट दिस, इट्स अ वंडरफुल स्पोर्ट, इट्स अ हिस्टोरिकल स्पोर्ट जो हमारे एंसेस्टर्स ने की है। एंड मेंटली, physically, emotionally, it's wonderful. Now we have with us very famous personality from Samara Events, Maria. Maria, welcome to GTC Punjabi. पहले तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you so much. Maria, are you supporting Kho Federation of England, right? So how do you support? क्योंकि आज जो है आज सेमीफिनाले हो चुके हैं, फिनाले भी हो चुके हैं। So ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਕੋਕੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਸਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕੋਕੋ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੋਕੋ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਆਲ ਓਵਰ ਦ UK. It's now all over the world and I think it's such a brilliant thing ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ girls too are females ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ it's a big thing। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਕੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਦਰਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੋ ਖੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਚਿੰਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਰਿਚਿੰਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਖੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ 10th ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੋ ਖੋ ਦੀ? ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਖੋ ਖੋ इज़ आवर स्पोर्ट्स जो छोटे थे खेलते थे अभी आज देखा तो मुझे बचपन याद आ गया इस करके ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਖੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ फंटास्टिक they create the history in UK because this is our game from India now they made it in UK ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ they can join us ਕਿ ਖੋ ਖੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ GTC ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाई कमीशन से आप सबका स्वागत करता हूं मैं अजय ठाकुर। इंडिया के बाहर इतने सारे खो खो प्लेयर एक साथ देखना शायद मैंने कभी नहीं देखा अपने 29 इयर्स के डिप्लोमेटिक करियर में, सो इट्स बिग थिंग। और मैं ब्रिज जी, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर साहब, हृदय जी, अजय जी, जिन लोगों को मैं जान रहा हूँ, इनके लिए बिग हैंड बिकॉज इन्होंने इतनी मेहनत करी है इस टीम को बनाने में। और मुझे पता लगा 54 कंट्रीज़ में इन्होंने खो खो को पॉपुलर किया है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। सो आई डेफिनेटली मैं ये लेके जाऊंगा हाई कमीशन में, अपने ऑफिसर्स को बताऊंगा कि कितना काम हो रहा है ग्राउंड पे।
और होपफुली किसी दिन आप में से कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा हाई कमीशन में टू नो कि आप क्या कर रहे हैं और हम इसको और कहाँ ले जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. The senior winner male team for today, Riching Regals. Come on, guys. As of now, you can see on the stage the best runner, but now I'm calling the best player, and best player we have Kavita from Slough. So this is great to see that we have a best player female, and I would like Mr. and Mrs. Thakur to present that award. So as of now, the best player is going on the stage. Now we will look upon the team plays. Our team to be ready. I kindly request everybody present here. This is just the final part of the award ceremony, so please keep cheering. We only have a few more teams and prizes to give away, okay? Can you all read what's written on the poster on stage? A big round of applause for Leicester, the winners of today. The winner girls of the 10th Coco Nationals. All right, big round of applause for the third prize team. ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 10th ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੋ-ਖੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚਿੰਗ ਰੀਗਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ. ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸਟਰਗਲਸ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ. Thank you so much. So tell me one thing, what strategy helped you win today match? It was actually it's teamwork. Actually, it's all about teamwork, and also we practiced very hard. And also we belongs to the same place, and under pressure we are good to handle the pressure. So at the pressure, the youngsters this helped us. Like the teamwork helped us very well. So that only makes us win. So which movement do you think changed the game? Any movement? Defense. Like when in the second turn we got the defense. So it was so close, but we did the part. Everyone did their part. So that moment, we really enjoyed that moment. That only make our team win. So what's your next plan? Next plan is to come back next year and win. Hat trick. This is our second time, and we're gonna go for the hat trick. So what challenges did you face during the whole match? Climate. Only climate. I It was totally too hot. agree. Yeah, it was too hot. Yeah, it's too hot. That's the only challenge we had, and some injuries. That's it. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. I want to say everybody, I'm so proud of my team. They were working so hard past few months. They were coming from quite far all the way to practice on the ground, and their dedication is the reason they won today. It was not easy match, but they worked really hard. Despite this climate also, they a big challenge. Yeah, that was a big challenge. Well done, boys. Proud of you. Thank you. What can I say? My dream come true. You done what? But I don't know. But you did it. Very well done, guys. I'm proud of you. So, I would like to announce a small prize to my team, £500 to you. And you have done, you deserve more than that, but that's how much I have budget right now. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Should I? Yeah, you can. It was so nice having this my team. Like, so we picked every players and everyone worked hard, and we know we have a good bond with everyone. So at the end, it's a team game. So team matters and unity matters. So it was really good. So celebration start now. Yeah, it starts now. Let's. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਮਨਸ ਟੀਮ ਵਿਨਰ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. Congratulations first of all your wonderful performance, and how do you feel now? Yeah, feel good. Feel you good? Yeah. And you? Yeah, we won. Woo! So what motivated your team to give us such a strong performances? Everyone, our hard work, Shivam,
Everything, just everyone playing together. So what was your game plan? Get as many outs as quickly as we can. Oh. Good game. A good defense before, yeah. Okay. So what challenges did your team overcome during the tournament? Yeah, everyone's from different places, so going to training and everything, that was really difficult. But I think we really pulled it together. Weather is too hot. So how do you stay motivated during tough matches? We just keep going and play as a team all together. So you are proud of your team? Yeah, very proud of everyone. What's your future plan next? I'm not sure. Coco England. Yeah. Olympics? Olympics, Commonwealth, Coco England. Yeah. Wow. Congratulations to your whole team. Thank you very much. Thank you. We'd just like to say a thank you to our sponsor as well, Oyster Properties, for all their continued support for Leicestershire Coco Club. And congratulations to you as well. Thank you very much, yeah. I'm really proud of my team. They played amazingly. They worked so hard, and I can do it. They're just my joy. Women empowerment. Exactly, yeah. The men didn't do it, but the women's managed to, yeah. Yeah, thank you so much. Thank you. Anmol Kaur, camera person, Mohinder Chana de naal, London.